Hello, my dear student. Welcome to the subject name is business environment. Today we are going to discuss third topic of Unit 1, that is classification or scope of business. Classification of business का scope क्या होता है? Various activity may be classified into the two broad category. Basically, जो business activity है basically categorized into the two activity, that is the industry and the commerce. तो जो बिजनेस होता है उसका जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली इसमें दो तरह की कैटेगरी आती है, इंडस्ट्री और कॉमर्स. वी कैन से दैट बिजनेस इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. सो स्टार्ट विद द मीनिंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्री. इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री बेसिकली कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल. इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री किसका पार्ट है? बिजनेस का पार्ट है. तो इंडस्ट्री इज डेफिनेटली अ इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें कि प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस मटेरियल होता है. जिस भी इंडस्ट्री जहाँ पर भी प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स और मटेरियल बनता है उस जगह को इंडस्ट्री कहते हैं. इंडस्ट्री इज रेफर टू इकोनॉमिक एक्टिविटी डेफिनेटली which are connected with conversion of resources into the useful goods. इंडस्ट्री क्या है? जिसमें कि रॉ मटेरियल रिसोर्सेज को कन्वर्ट किया जाता है किसी फाइनल गुड्स में. एंड जनरली द टर्म्स इंडस्ट्री इज यूज फॉर द एक्टिविटी इन विच द मैकेनिकल अपेरेंसेस एंड द टेक्निकल स्किल्स आर यूजेस. इसमें इंडस्ट्री में बेसिकली एक ऐसी एक्टिविटी है जहां पर कि मैकेनिकल अप्लायंसेस, मैकेनिकल टेक्निकल टूल्स वगैरह से यूज करके एज वेल एज द टेक्निकल स्किल्स के थ्रू कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है. एक रिसोर्सेज को फाइनल आउटपुट गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है. एंड these includes activity related to the producing of goods as well as breeding and raising of animals. Industry is not confined to producing or processing of goods. It also including breeding and raising of animals. अगर जहाँ पर भी आप raising of animals और breeding animals का देखते हैं, it also comes under the industry. The term industry is also used to means group of firm प्रोड्यूसिंग सिमिलर रिलेटेड गुड्स. इंडस्ट्री क्या हुआ कि जहां पर बहुत सारे फर्म सिमिलर काइंड्स ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, दैट आल्सो यूज्ड टू कॉल्ड एज इंडस्ट्री. इंडस्ट्री में क्या हुआ? बहुत सारी फर्म जब सिमिलर काइंड्स ऑफ रिलेटेड गुड्स को प्रोड्यूस करती है, दैट आल्सो कम्स अंडर इंडस्ट्री डेफिनेशन. फॉर एग्जांपल, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रेफर टू all manufacturing units producing textile goods from the cotton. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसमें बेसिकली जो भी ऑल मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड यूनिट्स जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल में इट बेसिकली गुड्स basically related to the cotton. In a similar manner, electronic industry would include all the producing electronic goods and so on. So we can say the industry may be divided into the three part. So here you can see that here you can see that the business activity is basically combination of two, industry and commerce. और जो इंडस्ट्री होती है, आप लोगों ने देख लिया है कि इंडस्ट्री बेसिकली क्या होती है. इंडस्ट्री इज बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद द कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू द यूजफुल गुड्स. जिसमें कि हम किसी भी रिसोर्सेज को एक यूजफुल गुड्स में जब कन्वर्ट करते हैं वो इंडस्ट्री में होता है. इंडस्ट्री बेसिकली रिलेटेड फर्म्स का ग्रुप होता है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री होती है, इट्स फर्दर सब डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. तो वी कैन से दैट प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूडिंग ऑल दोज एक्टिविटी विच आर कंसर्न विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड द प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स. तो वी कैन से प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें कि आप बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज को रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन होता है. और वी कैन से दैट इन अ सिंपल लेमन लैंग्वेज, प्राइमरी इंडस्ट्री इज बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री. तो बेसिकली जो भी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री होती है, दैट्स कम अंडर द प्राइमरी कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री. सेकेंडरी इंडस्ट्रीज बेसिकली दीज आर द कंसर्न विद द using material which have already been extracted at the time at the primary stage. जो भी प्रोडक्ट प्राइमरी स्टेज में क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है, दैट यूज इन अ सेकेंडरी इंडस्ट्री. एंड दैट सेकेंडरी स्टडी इज बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन बेस्ड इंडस्ट्रीज. तो जो आप कह सकते हैं कि जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, इस कम्स अंडर द सेकेंडरी इंडस्ट्री कैटेगरी. तो प्राइमरी बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड, सेकेंडरी इंडस्ट्री इज बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन बेस्ड इंडस्ट्री, और टर्जरी इज बेसिकली कंसर्न विद द providing service to the primary and secondary
इंडस्ट्री। तो टर्जरी बेसिकली वो ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो कि सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है प्राइमरी और सेकेंडरी को। मींस टर्जरी सर्विस बेसिकली सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री विच सपोर्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्विस। तो इंडस्ट्री प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को जो सपोर्ट करती है दैट्स कम अंडर द टर्जरी। तो टर्जरी बेसिकली सर्विस बेस होती है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी को सर्विस प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली दिस टर्जरी है सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, लाइक वी कैन से दैट। So this is all about the industry part. Now the second business activity, that is a commerce. So commerce is basically combination of trade and auxiliaries to trade. Now start with the commerce. Commerce क्या हुआ? It also comes under the business category. So business basically combination of two words. You can say business basically combine कॉम्बिनेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। दो एक्टिविटी को मिलाकर बिजनेस बनता है। तो बिजनेस में पहले प्रोडक्शन जो भी होता है वो इंडस्ट्री में होगा। कॉमर्स बेसिकली इंक्लूड ऑल दोस एक्टिविटी विच आर नेसेसरी टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेसिकली कॉमर्स में क्या होता है, जब भी कोई भी गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज होता है उसको फैसिलिटेट करना, दैट्स कम्स अंडर द कॉमर्स कैटेगरी। तो वी कैन से दैट कॉमर्स में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स का सेल होता है। तो सेलिंग जो होता है, तो कॉमर्स इज ऑल्सो सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज नोन एज ट्रेड। तो कॉमर्स में क्या होता है, किसी भी गुड्स का जब सेल होता है, बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स होता है, दैट इज कम्स डेफिनेशन ऑफ ट्रेड। और ऑक्सिलरी टू ट्रेड मींस क्या होता है, जब whenever all those activity which are required to facilitate the purchase and sales of goods, जो भी फैसिलिटी और सर्विसेज ट्रेड को फैसिलिटेट करती है, ट्रेड को मींस सो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में और सेल आउट करने में हेल्प करती है, दिस सर्विसेज इज नोन एज ऑक्सिलरी टू ट्रेड मींस सर्विसेज। तो ट्रेड से रिलेटेड सर्विसेज इज बेसिकली ऑक्सिलरी टू ट्रेड, और ट्रेड मींस सेल्स ऑफ गुड्स and buying of goods is comes under the trade. So commerce basically sales of goods of service, sales of goods, buying and selling of goods, and the services is comes under the commerce definition. So basically we can say that transport, banking, insurance, communication, advertisement, packaging, warehousing, commerce, therefore though all these activities comes under the auxiliary to trade. So we can say that in a simple layman language that the commerce provide the necessary link between the producer and the consumer. तो commerce में basically एक commerce एक ऐसी activity है, वैसी business activity है जिसमें कि हम producer से consumer तक सामान पहुंचता है। ट्रेड और ऑक्सिलरी टू सेल्स के थ्रू कॉमर्स कंज्यूमर तक अल्टीमेटली प्रोडक्ट रीच करता है। एंड इट एम्ब्रेस commerce basically embraces it include all the activity which are necessary to maintain a free flow of goods and services, and there's all the activity involving the removal or hindrance in the process of the exchange are included in the कॉमर्स। तो कॉमर्स हम ये कह सकते हैं बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड बेसिकली आप कह सकते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड होता है। ट्रेड की डेफिनेशन में और ट्रेड की उसमें आप ये कह सकते हैं इंटरनल ट्रेड में आप बेसिकली इस बेसिकली होलसेल और रिटेल आता है, और एक्सटर्नल ट्रेड में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आता है। Auxiliary to trade basically warehousing, insurance and advertising, and transportation and banking services comes under the auxiliary to trade, means all the services which help or facilitate the trade, that all come under the these all services are the auxiliary to trade. तो दिस इज ऑल अबाउट द बिजनेस एक्टिविटी स्कोप। बिजनेस का जो स्कोप होता है बेसिकली टू टाइप स्कोप, दो टाइप में आप बताएंगे, दैट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। और industry is basically combination of three subdivided into three parts, that is a primary, secondary and tertiary. And the commerce is also subdivided into two parts, trade and auxiliary to trade. commerce में basically sales and goods of services होता है, goods and services का trade होता है, buying and selling of goods is known as trade, and the services which help trade, तो that auxiliary to trade. और commerce basically क्या है, it's basically a process or activity which help to provide goods from producer to consumer. तो consumer से इंडस्ट्री से जो भी गुड्स कंज्यूमर तक जाएगा,
that all comes under the commerce. So we can say that this is all about the business activity scope. तो industry और commerce से combination business activity है. So this is all about the business scope activity. Thank you, my dear student.